this is the end. This is my last day in Delhi. कल by the time सुबह के 6 बजेंगे I would be moving out, which means for a while you're not going to be seeing this room. And if you see this room, then the ownership of this room would at least not belong to me. I've spent a great amount of time in this room. The vlog was started here. So there are a lot of memories associated with this place and with Delhi in general. More than the places in Delhi, I'll miss the people I met in Delhi. And even though it's a paradox, because I don't really miss anything or anyone, but at the same time, I do have memories of them. I don't hold on to them, but there's a subtle appreciation in my heart for all that they have done and all that was made possible in my life because of them. So that is very special to me. जब से ये vlog शुरू हुआ, I reduced my weight, got my weight back on, फिर से reduce कर दिया weight को, went from doing moderately good to decently good to being jobless to having my own business. I went through heartbreaks, went through disappointments, had a lot of unexpectedly good things happen to me. Delhi has been a fun ride, and I cannot believe it when I say it, but the masters were not that difficult. Like, if I genuinely think about it compared to the other things that I have done in the same time frame, I have done harder things on the hard days of Jamia. कि जिस दिन जामिया की कोई बड़ी चीज़ होती थी उसी दिन कोई और उससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ में करके आया हूँ. That means के even on their best days the course was not exceptionally difficult. इसकी वजह से I feel very grateful for that. I am not being boastful. The reason I feel grateful is because अगर ये course बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, then perhaps I would have never been able to do what I did. And फिर वहाँ पे मुझे हमेशा एक टाइप का अनफुलफिलमेंट फील होता रहता. I have not been making these videos because I just don't like the build up towards the goodbye. I suck at goodbyes. मुझे आता ही नहीं goodbye कहना. I did not go to my farewell. I don't know why. I chose to go to Rashtrapati Bhavan instead. I'm just really bad at goodbyes. समझ में बिल्कुल नहीं आता. I really don't get it. Don't get the point of it. And it just makes my heart heavy. I don't like that feeling. So I just shy away from it. You can say run away from it. It's the same with people. If I know I'm going to meet somebody for the last time, I'm only going to do that as long as the other person doesn't know it. I went for a little bit of trimming दाढ़ी की कल, and of course Rashid bhai does not know that by tomorrow morning I'll be gone. He may never see me again, potentially. But since he did not know that, I felt comfortable. So I feel a little bit weird saying goodbye because the other person has some expectations शायद, या फिर they get sentimental and I do not want that kind of sentiments floating around the air. पता नहीं, I just don't like it. तो इसी वजह से I've been very shy in terms of speaking out about my fear of letting go कभी ना कभी. But goodbyes मेरे से नहीं हो पाते until and unless वो one-sided goodbyes हो. That's life इस वक्त. Still feels like a dream कि जामिया ख़त्म हो चुका है. Feels like कि बस अभी ग्रुप पे मैसेज आएगा कि अरे ये करना है. The people I have met, the people who fell in love with me and the people I've fallen in love with, the beautiful canteens of जामिया जिनके अंदर मैंने मुश्किल से 1/10 of variety of food ही खाया है जो वो ऑफ़र करती है. जामिया के वो एरियाज़ जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए, जामिया के वो एरियाज़ जहाँ पे मैंने चल के घिस दिया उन्हें. आई मिस ऑल ऑफ देम. एंड जामिया विल ऑलवेज रिमेन दैट वन ट्रबल्ड वाइफ या फिर द वन ट्रबल्ड हस्बैंड इन पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज जिसके साथ आपका डिवोर्स हो जाता है बिकॉज़ वो कभी अपने नहीं हो पाते. तो वो हम सफ़र था लेकिन उससे हम दवाई ना थी, वो वाला सीन हल्का सा. बिकॉज टू मी इफ समबडी आस्क्स मी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइफ, माई माइंड ऑटोमेटिकली स्विचेस टू अलीगढ़. मे बी इट्स द बार दैट अलीगढ़ हैज सेट. अलीगढ़ इज़ way ahead in terms of the culture it provides and the kind of quality it provides
of the quality of life that it provides, at least for guys. I cannot say much about women, of course, but I would choose अलीगढ़ का माहौल या अलीगढ़ की फ्रेंडलीनेस, let's just say, over Delhi का एक uncouth, rude and indifferent version. Even though I first liked that a lot, but then I realized कि इसके खामियां बहुत ज़्यादा हैं. आप अपने बेड में लेटे लेटे हो सकता है खास के मर रहे हो and people wouldn't notice, which is something very different from what I've seen happen in Aligarh. Even if people do not know you, they'll still come out to help you, and I hope that that gets maintained. But regardless of that, Jamia has given me a lot, and I really appreciate all of that. I just hope the rest of the June is as happening as the beginning of the June was. We went to Amrik Sukhdev and बहुत कुछ किया हम लोगों ने. हम लोग इतना घूमे कि let's just say कि for 5 days I was averaging as per my phone 3 hours of sleep. अब आप सोच लीजिए, मैं 3 hours of sleep for 5 days straight. It was very hectic. जान निकल गई मेरी एकदम. But yeah, we had fun. अली के साथ, सभी के साथ, जूही थी, हलीमा थी, मैं था, रिफान जवाद, and बस मज़े करते रहे, चिल मारते रहे. And now it's time for all of us to part ways कहीं ना कहीं. I mean in the short term at least. ऐसा नहीं, दुबई दुनिया के दूसरे कोने पे तो है नहीं कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा. बात करते हैं दुबई की. दुबई इंशाल्लाह आई बी गोइंग इन अर्ली जुलाई नाउ, या फर्स्ट 15 days ऑफ जुलाई में कभी भी. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आसिफ भाई हैज़ सम बिजनेसेस टू टेक केयर ऑफ, जिसकी वजह से ईद के अंदर उनको वापस आना पड़ेगा घर पे. एंड घर पे आने के बाद उन्हें कुछ टाइम तक रुकना पड़ेगा. मैं जा तो कभी भी सकता हूँ, मैं जा तो अभी भी सकता हूँ इनफैक्ट, बट द थिंग इज़ कि आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, बी आई वॉन्ट टू रीच देयर व्हेन ही इज़ ऑलरेडी देयर, क्योंकि मेरा वहाँ पे खुद ब खुद ड्रॉप बाय कर जाना थोड़ा सा अटपटा लगता है मुझे. एटलीस्ट द साउंड ऑफ इट कि भाई जो मेन बंदा वहाँ पे पहले से रह रहा है तब जाओ जब वो वहाँ पे है, तो यू डोंट हैव एनी सेटलमेंट इशूज़ इतना ज़्यादा कि भाई ये कैसे करना है, ये कहाँ से होगा, इतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में पक्का ना पड़े. तो इस वजह से वी आर ट्राइंग टू मैच दैट टाइमिंग अच्छे से. एंड द बिजनेस इज़ गोइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. Each day that you wake up with the business, it's a sense of restlessness, not anxiety, restlessness. It's not fear as well. Once you get rejected enough, the fear goes away, because you know कि अरे ये तो ठीक हो जाएगा. Your risk tolerance goes up, everything goes up. तो बस वही है यार. A lot of times things are about surviving, not thriving. Not many people understand it. Like people always glorify thriving, but sometimes when you are like learning a lesson na, and as soon as you learn that lesson you will thrive. But वो learning the lesson में, even if you are surviving, you're trying to figure out मैं क्या सीखना है, like what is life trying to teach me, उसमें you end up being very sad and depressed with your lack of progress. Don't do that. Like think about कि ज़िंदगी में सिखाना क्या चाह रही है. As soon as you crack it, you'll thrive. So that's something important that I've learned in fitness. अब मैं आके एकदम से 8 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ. अब इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा. सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड जस्ट फॉर वन लास्ट टाइम से गुड बाय टू दिस रूम. ये पूरा जो रूम है, फॉर अ व्हाइल इट्स गोना गो अवे, ऑल ऑफ इट, एंड आई एम गोना कीप दीज इन माय मेमोरी. सभी का भी थोड़ा सा सामान है यहाँ पे, इट्स प्रॉब्ली ही विल बी शिफ्टिंग इन हियर. सो या दैट्स इट. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस.